A major controversy has now come to fore in Ayodhya Ram Mandir land deal. AAP and Samajwadi Party there have alleged that a piece of land which was bought for 2 crore rupees from its owners was then sold to Ram Janmabhoomi Trust for 18.5 crores for the construction of Ram Temple. What makes the deal more suspicious here is the claim that there was only a difference of 10 minutes in signing both the deals. And trust member Anil Mishra and Ayodhya Mayor Rishikesh Upadhyay are listed as witnesses in both these deals. Both AAP MP Sanjay Singh and former UP Minister Pawan Pandey have now raised concerns over the 1.2-acre land deal, questioning who was the beneficiary of the 16 crore rupees. Now, after the matter surfaced, war of words between political parties and the trust has intensified. Congress General Secretary Priyanka Gandhi has called it an insult to people's faith. Congress has now urged the Supreme Court to call for an audit, while the Ram Janmabhoomi Trust has called claims misleading and calls this propaganda by political parties. भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। लेकिन ये जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन जो राम जन्मभूमि ने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, ये उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे ये जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा भी जमा किया, घर घर में जाकर, उसके ऊपर भी बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो सके। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। इन जो जानकारी सामने आई है मुझे लगता है गड़बड़ है। शिवसेना दल राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए वे अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। क्या अधिकार है उनको हिंदुत्व के बारे में बोलने का? कांग्रेस दल ने 22 वकीलों की फौज देश के उच्च न्यायपालिका में लगाई थी ताकि राम मंदिर का फैसला तुरंत न आए, देरी से आए। उस कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता साझा करती है, और जब राम मंदिर के भूमि पूजन पर राष्ट्रवादी दल के नेता सवाल उठा रहे थे, शिवसेना की उस समय खामोशी क्यों थी? Now, India today reached the residence of the seller of the land, Sultan Ansari's residence in Suhati village, Ayodhya. As per opposition parties, Ansari, along with one Ravi Mohan Tiwari, allegedly purchased the land worth 2 crore rupees and then sold the land to Ram Janmabhoomi Trust at a premium price. यहाँ पर
अमरूद की ये बगिया है और यही वो जमीन है जिस पर इतना हंगामा बरपा है। दरअसल ये जमीन कुसुम पाठक के नाम पर थी और जिसे रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से अग्रीमेंट कुछ साल पहले किया गया था और उसी जमीन को अब न सिर्फ उसका रजिस्ट्री कराई गई बल्कि इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिलहाल उसका अग्रीमेंट करा लिया है और 18.5 करोड़ रुपए में इसका अग्रीमेंट हुआ है। और इसे ही लेकर पूरा का पूरा विवाद है कि 2 करोड़ रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई महज कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में कैसे उसका अग्रीमेंट हुआ। तमाम विवाद इसी को लेकर के है और अब पूरी सफाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देनी है। Moving over to West Bengal, as the Apex Court hears petitions seeking SIT probe into post-poll violence in West Bengal, several intervention pleas have now been moved by women who were allegedly attacked by groups of TMC workers and raped. 3 separate applications have been filed in the Supreme Court seeking SIT probe into the sexual violence. In one of the applications filed by a 60-year-old woman, the senior citizen has alleged that she was gang raped on 4th of June while her daughter-in-law was beaten up. The plea claims that the horrific attack took place in retaliation against her family members who supported a different political party. In another plea here, a 17-year-old girl alleges that she was raped by a group of men on the 9th of June as her father belonged to a rival political party. Similar allegations have also been raised by a 19-year-old. False and imagine. We must state clearly that after taking over as chief minister, Mamata Banerjee has asserted that no violence will be allowed. Nobody will be driven out from their home. If you have any case where people are not being returned to their house, give us the name. We shall see that the administration takes steps to return them back to their. The BJP has suffered a miserable defeat. And after that, they must find an issue. We are very happy that, these 3 women had the courage, to come forward. And there are innumerable number of women, who have been raped, sexually assaulted, molested, and thousands of women who are still homeless, but they don't have the courage to come up and, even lodge an FIR, because if they lodge an FIR, they will not be allowed to stay in their village. They are already homeless and they are being threatened that they will be murdered. Now, Chirag Paswan is battling an all-out rebellion within the LJP. 5 out of 6 LJP MPs will reportedly meet with the Lok Sabha Speaker today and demand that they be recognized as a separate unit and not as part of the LJP. This revolt is now being unsurprisingly led by Chirag's uncle, Pashupati Kumar Paras, who has spoken out time and again against his nephew. In fact, Paras has now taken over as the parliamentary party leader, effectively outfoxing Chirag. In an attempt to quell dissent here, Chirag visited his uncle's house in Delhi but was made to wait for at least 25 minutes right at the gate. He then was allowed in only to be told that his uncle wasn't at home. Chirag is facing his biggest leadership test as these rebel MPs now have demanded a change in party leadership and said that LJP must be a part of the NDA in Bihar and work with Nitish Kumar. सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीनों से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। आदरणीय जो सांसद हैं हाजीपुर से श्री पशुपति पारस जी, वो पहले से भी नाराज चल रहे थे, काफ़ी दिनों से नीतीश जी के संपर्क में बने हुए थे और नीतीश जी ने और उनकी पार्टी शुरू से ही लोजपा को तोड़ने में लगी हुई है और लगातार संपर्क में उनके नेता जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी लगे हुए थे पार्टी को तोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग लगे थे। हमारे नेता वही रहेंगे, चिराग पासवान ही रहेंगे। हम लोग लोजपा से हैं और हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। लोकसभा चुनाव के समय हमारे मित्र और साथी
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों से संपूर्ण एनडीए के घटक चुनाव लड़े बिहार में, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक सीट को छोड़ करके सभी लोकसभा की सीटों पर हम विजयी रहे। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया और उनके पुत्र की राजनीति की महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला किया, जिसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसके स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। Now moving over to Telangana, Chief Minister K. Chandrasekhar Rao's decision to provide 32 luxury cars to additional collectors amid the pandemic has now drawn flack from the opposition parties. Each car is valued at around 30 lakh rupees. These cars have been bought to facilitate the visit of additional collectors to villages when the state exchequer is really in bad condition due to loss of revenue. The medical infrastructure is insufficient. Spending huge money on luxurious cars has now become a matter of great criticism for the KCR government. BJP pointed out that the state finance minister T. Harish Rao had made statements recently that the state had lost massive revenue due to lockdown and questioned the need for such a splurge when the state is reeling under severe financial crisis. The whole world is suffering due to COVID, and so is Telangana, and there is a serious financial crisis. In this financial crisis times, Mr. Kalvakuntla Chandrasekhar Rao has the audacity to buy 32 Kia cars for his 32 additional collectors, new Kia cars for his additional collectors. I am only wondering if this government is colluded with the Kia Motors to provide them some kind of a financial relief in this COVID time. BJP denounces the decision taken by CM KCR to buy 32 ultra-luxury vehicles, Kia Carnivals, and present them to the additional collectors of the state. How can a state showcase this kind of opulence when they are a revenue deficit state? Meanwhile, the Vatican has refused to provide any relief to Sister Lucy Kalapura, who protested against rape-accused Bishop Mulakkal. In fact, the Vatican has now rejected her appeal against expulsion from the Catholic Church on charges of indiscipline and failing to give a satisfactory explanation for her lifestyle in violation of Vatican rules. Sister Lucy is being punished by the Vatican for her participation in demonstrations against the Bishop Franco Mulakkal, who is accused of raping a nun. Sister Lucy has now got a letter from her congregation saying that she should vacate the convent room within a month's time, as the Vatican has now decided, the Vatican court has decided to dismiss her appeal. While speaking to India Today, Sister Lucy has said that action against her are not based on facts. She's also said that her appeal before the Supreme Court Council of the Vatican is still pending. They produced last year a letter in the month of May, and that letter Who, ma'am? From the Supreme Court, Supreme Tribunal, but they cannot produce a letter like that before the trial in the court. But they produced for the sake of the superiors of the FCC, I think, and now they got it out because they made a drama now here, because they are telling that according to the court verdict you are out, and Supreme Tribunal is rejected your letter, like that they told. But it is a lie, a complete lie. They are saying not truth. They are not saying the truth. So what is happening? I will discuss my advocate, and she hasn't talked about me, about the topic to me so far. The trial is started or it is going on, but no, it is not completed. Anyway, she told me, she has sent an email to me with the other letters also. That letter is, the particular letter from the Supreme Tribunal is produced on 2021 May 27, she says. But it is not fact. And she says that within 1 week after you receive the letter, you will be move out
There is no excuses. You should go out, and we will not give you anything. We will not consider you as a servant of our community also, our congregation also. Next steps, we will go to the court and we will force you to go out. Like that, she gave me a letter too. Okay, so are you planning to move out at this juncture? No, never. Because no, already I started given a file in the court